Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm going to talk about the importance of getting good band score in speaking. Speaking में band score लेने की importance आपको मालूम है क्या है? एकदम score ऊपर जाता है. And this is a module which can promise you 8 to 8.5 bands. But the problem that students they face is it is generally they get stuck up while speaking the cue card. क्यू कार्ड बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं, उनके पॉजेज आते हैं और ग्रेजुअली वो इतने ब्लैंक हो जाते हैं कि उनसे बोला नहीं जाता. आई विल टेल यू वेरी इजी टिप. कार्ड आपके सामने आता है, कार्ड को देखो और कार्ड का फ्लो चार्ट बनाओ. नाउ आई विल बी टेलिंग यू हाउ आई हैव मेड अ स्पाइडर चार्ट फॉर यू. आई विल बी शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू. ध्यान से देखना इसको. कार्ड है टॉक अबाउट टाइम, इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम, विच इज़ योर फेवरेट टाइम, why do you like this time of the day, or do you like to waste time. ये सारे क्वेश्चंस हैं. अब इसमें वर्ड आ गया हमारा यू का मतलब है that you have to quote about your personal experience. Now look at the spider chart the way I have made it for you. फर्स्ट ब्लॉक मैंने आपको दिया है importance of time. डायरेक्टली ये मत बोलो time plays an important role in our life. लाइन तो ठीक है बट स्कोरिंग नहीं है. Pick up a line which is very effective. That is known as the environment or the background of the card. Like you can give it a very good start. Sir, it is rightly said that time and tide waits for no one. Or time is a key to success. This gives a start to the card. Then you come up, the second point is that which is your favorite time of the day? Which is your favorite time? Morning, evening, और आफ्टरनून तो फेवरेट कम ही बोल सकते हो. और हमने चूज़ वो टाइम करना है जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कंटेंट है. अगर कंटेंट नहीं है तो स्कोर नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी क्लियरली दिस थिंग शुड बी इन योर हेड. सब स्टैंडर्ड मटीरियल को मत फॉलो करो, उसमें स्कोर नहीं है. नाउ विच इज़ योर फेवरेट टाइम ऑफ द डे? ईदर यू कैन स्पीक ऑफ मॉर्निंग. बड़े बच्चों के दिमाग में आता है मॉर्निंग, बट मॉर्निंग में आपके पास मटेरियल नहीं है, मटेरियल बहुत कम है. यू गिव इट अ स्टार्ट लाइक दिस. सो नो डाउट आई एम एन अर्ली राइजर. आई लाइक मॉर्निंग्स. आई एम वेरी फ्रेश एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी. आई लाइक टू डू माई स्टडीज. समटाइम्स आई लाइक टू डू मेडिटेशन ऑल्सो. आई लाइक दिस टाइम. बट अब ये बट आपको स्कोर देगा और आपका पॉज खत्म करेगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर माई मॉर्निंग्स आर वेरी हेक्टिक. I have to rush for my classes or I have to rush for my job. Then sir, I don't even have time to read the newspaper, or I don't have the time to enjoy breakfast with my family. So my favorite time is evening. अब ये मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? स्पाइडर चार्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के साथ क्या है ये? आपके पॉजेस कम हो रहे हैं. माई फेवरेट टाइम इज इवनिंग. मैंने मॉर्निंग और इवनिंग को कनेक्ट किया है. कनेक्ट करने से फ्लो बनता है. माई फेवरेट टाइम इज इवनिंग और यहाँ पर इवनिंग की सारी एक्टिविटीज़ बोलो. आई लाइक इवनिंग्स बिकॉज आई एम डी स्ट्रेस फ्रॉम माई वर्क. आई एंजॉय दिस टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई लाइक वॉचिंग TV. आई यूटिलाइज माई हॉबीज़. आई इंटरेक्ट विद माई फ्रेंड्स. आई गो टू जिम. और आप ये भी बोल सकते हो दैट समटाइम्स ड्यूरिंग इवनिंग या मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग इवनिंग आई लाइक टू प्ले जो भी गेम आपको अच्छी लगती है. अब जो गेम अच्छी लगती है उसके ऊपर जब आप बोलोगे यू विल बी हैविंग 10 to 12 लाइन्स. तो देखो आपके पास कितना मटेरियल आ गया यहाँ तक. दिस इज जस्ट द मिड ऑफ द कार्ड. और अगर आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है और कंटेंट स्पाइडर के साथ चार्ट के साथ आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करके बोलते हो, बनाते हो, देन इट बिकम्स वेरी ईजी. कार्ड को कभी भी रट्टा मार के मत पढ़ा करो. ऑलवेज मेक अ स्पाइडर चार्ट, ऑलवेज मेक अ फ्लो चार्ट एंड देन मेक द कनेक्टिविटी ऑफ द कार्ड. डोंट से आई एम यूजिंग कनेक्टर्स. ऑलवेज से आई एम मेकिंग द कनेक्टिविटी ऑफ माई ideas. And when there is a connectivity of an idea, there is going to be a flow. This is beyond any shade of doubt. Now the second point comes that importance of making timetable. ये मैंने आपको spider chart में दिया, आप देखो अपनी screens पे. Importance of making timetable.
यहाँ पे आपने कहना है आई लाइक इवनिंग्स बट सर आई एम एन ऑर्गेनाइज पर्सन. I always make my timetables, set my priorities, and then I like to do my work. This makes me very comfortable, and this is also very helpful in making an optimum utilization of my time. Sir, I never waste my time. I really dislike to waste my time because once I set my timetable, I set my targets, I set my priorities, I set my goals. This makes me easy to balance myself. And this is very helpful for me because with this timetable, I'm able to utilize my hobbies. Otherwise, my routine is so hectic that I don't have time to utilize my hobbies. But my timetable helps me in utilizing my hobbies. And my hobby is listening to music as well. This is also a free time for me and I enjoy it. This is how you are going to develop the card. Development of a card needs a story, it needs a connectivity. And believe me, this is how you will form a complete card and then you will be able to speak without a pause. Now, one thing I would like to tell you, ये कार्ड अभी आपने सुना है. इस कार्ड को चलो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको सेव कर लो कि बार बार आप अगर इसको सुनते भी हो तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा. नाउ व्हाट यू डू इज़ कि आप ये कार्ड देखो, इसका स्पाइडर चार्ट, मेक इट इंडिपेंडेंटली एंड ट्राई टू स्पीक दिस कार्ड ऑन योर ओन. अब ये मत करना कि कार्ड को आप अपने आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो. स्पीक ऑन योर ओन का मतलब है कि यू हैव टू स्पीक लाउडली. और सबसे अच्छी प्रैक्टिस आई टेल यू कि अपना फ़ोन ऑन करो. एवरीबडी हैज़ अ फ़ोन. फ़ोन में एक रिकॉर्डर लगाओ, टाइमर लगाओ एंड स्टार्ट स्पीकिंग. Then try to check out where the mistake is. You will find that your speaking is becoming flawless. और उसमें pauses कम है. Content जितना अच्छा होगा बच्चे उतने pauses कम होंगे. I hope it's clear. Kindly save and try to practice. Speaking is a game of practice. I hope you have understood. If there is any other problem, I'll be sharing it with you. I'll rather try to solve it. So I hope you'll be getting what the idea is. I'll be giving you as an assignment. ये कार्ड टाइम का है. आप कार्ड बनाओ जॉब, फेवरेट जॉब, which job you want to do, why you want to do you think you're capable of doing this job, do you have a talent of this job, is this job available in your country. ये सारे पॉइंटर्स को माइंड में रख के एक स्पाइडर चार्ट बना के उसको फ़ोन में रिकॉर्ड करो. देखो आप कर सकते हो. यू कैन डू इट. इट इज़ अचीवेबल. इट्स डूएबल. थैंक यू. स्टे सेफ.